नमस्कार। इस कार्यक्रम में पिछले 6 महीनों से आप साधारण घटनाओं से जुड़े विज्ञान को देख रहे हैं। उम्मीद है कि इस महीने के दौरान भी आपने हमारे 6 नए सवालों को देखा ही होगा। आज हम अपनी यात्रा एक गांव से शुरू करते हैं। What makes smoke hang so still near the ground? ये धुआं ऐसे क्यों टंगा हुआ है? There are two characteristics of winter in our country. A, the sky is clear, and B, there are no strong winds to disperse pollutants. During the day, the earth heats up, but not much, because it is exposed only to the slanting rays of the winter sun. So it cools down fairly rapidly after sunset by radiating heat into the clear sky. The layer of air in contact with the earth also cools down, leaving a warmer blanket of air above it. And this is called temperature inversion. Now, why inversion? Because normally we expect the temperature to drop as we climb higher. Those of you who have been to hill stations in the summer know this very well. This is also why high mountain tops are snow-clad. But in this case, the air near the ground is cooler than the air higher up. This is why one refers to this type of situation as temperature inversion. As a result, the smoke that homesteads produce gets cooled by this cool layer of air near the ground. And as you all know, a cooler gas is heavier than warmer gas, so it stays put near the ground. And as I told you earlier, there are no strong winds to disperse it. जाड़ों में दिन छोटे होते हैं और सूर्य की किरणें धरती पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए जमीन बहुत गर्म नहीं हो पाती। दिन भर में जितनी गर्मी वो सोखती है, उसे सूर्यास्त के बाद वो खुले आसमान में फैलाकर खुद ठंडी हो जाती है और अपने आसपास की हवा को भी ठंडा कर देती है। लेकिन ऊपर की हवा गर्म रह जाती है। आमतौर पर जमीन के पास की हवा गर्म और ऊपर की हवा ठंडी होती है, इसलिए इस उल्टी स्थिति को टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। अब घरों से निकला हुआ गर्म धुआं जमीन से लगी हुई ठंडी हवा से लगकर अपने आप भी ठंडा हो जाता है। यह ठंडा धुआं परत बनकर जमीन और ऊपर की गर्म हवा के बीच फंस जाता है। जाड़ों में एक बात और होती है, हवा कम होने के कारण धुआं फैल नहीं पाता। इस पूरी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको एक प्रयोग दिखाना चाहेंगे। इस थर्मस फ्लास्क में बर्फ भरी हुई है और इसमें एक कांच का ट्यूब रखा हुआ है जो अब बहुत ठंडा हो गया है। मैं इस ट्यूब में अब धुआं भरता हूं। अब हम ट्यूब को बंद करके फ्लास्क में वापस डाल देते हैं। एक निगाह डालें इस अगरबत्ती से निकलते हुए धुएं पर। यह धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसका कारण यह है कि धुआं गर्म है और आसपास की हवा से ज्यादा हल्का है। अब हम इस फ्लास्क से ट्यूब को फिर से बाहर निकालते हैं। आप गौर करेंगे कि धुआं ठंडा होकर ट्यूब के नीचे की तरफ रह गया। तो अब आप समझे कि जाड़े के मौसम में धुआं जमीन के पास क्यों टंगा रहता है। और अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। Why does dry hair not stay in place like wet hair? गीले बालों की तरह सूखे बाल क्यों नहीं जुड़े रहते? First of all, water and oil reduce the friction between the brush and the hair and make it easier for us to comb. That's easy enough. But why doesn't wet hair fall apart like dry hair? That's because thin films of water covering tufts of hair act like rubber bands. As you can also see when I dip this brush in the water
and lift it up. As we have seen many times before, the surface of water acts like a stretched rubber membrane, which tends to shrink. But this is only a surface property. It is absent inside any liquid. As you can see, the hairs spread when I dip the brush in the water. Lift it up, and they stick. So you see, surface tension does so many amazing things and has so many implications in our lives. सूखे बालों की अपेक्षा भीगे बालों में कंघी करना ज्यादा आसान है, क्योंकि पानी बालों और कंघी के बीच रगड़ को कम कर देता है। इसके अलावा भीगे बाल अपनी जगह पर स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि बालों के ऊपर पानी की पतली परत रबर बैंड का काम करती है। इसे जांचने के लिए माचिस की 2 तीलियां लीजिए। तीलियों को पानी में अच्छी तरह से भिगो दीजिए और भिगोने के बाद इनको पानी के ऊपर डाल दीजिए। देखिए, दोनों तीलियां आकर्षित होकर कैसे एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इसका कारण यह है कि पानी की सतह तने हुए रबर की तरह होता है, जो खींचकर तीलियों को एक दूसरे के नजदीक ले आता है। लेकिन यह सतह का तनाव सिर्फ पानी के ऊपरी परत पर होता है, पानी के अंदर नहीं। इसलिए डूबी हुई चीज एक दूसरे से नहीं मिल पाती। एंड नाउ फॉर एन इंटीमेट इंडोर सीन। Why does one blow out the flame of a joss stick? अगरबत्ती में आग की लपट क्यों बुझा दी जाती है? सदियों से धूप की सुगंध को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। पुराने जमाने के लोगों का ख्याल था कि धूप की सुगंध से भूत प्रेत दूर हो जाते हैं। आज तक भी पूजा में वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए धूप गुगुल जलाया जाता है। अनेक देशों के निवासी धूप धूमन का इस्तेमाल हर धार्मिक समारोह, उत्सव या अंतिम संस्कार के समय भी करते हैं। धूप एक प्रकार की अगरबत्ती है, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है, और वो ये कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी आग की लपट को बुझा देते हैं। डॉक्टर घोष, अगर इस आग की लपट को बुझाया ना जाए तो क्या इस अगरबत्ती से ज्यादा सुगंध नहीं निकलेगी? Not really, because the smell of incense is caused by the unburnt aromatic particles of the substances from which joss sticks are made. These are some of the ingredients that are used in making joss sticks. There are various kinds of powders, for example, charcoal, sandalwood, and various kinds of resins. Now, they are not volatile at room temperature, unlike, for example, sandalwood. So, we have to heat them to make them vaporize and spread throughout the room. But we can't let them burn completely, because in that case, the chemical process of combustion would convert these substances into substances which do not have the scent that we want. So we have to blow out the flame. But let the sticks smoke so that some of these aromatic particles can be emitted unburnt or maybe only partly burnt. And then they will diffuse through the room and give us the scent that we want. अगरबत्ती से सुगंध निकलने का कारण इस तीली पर लपेटा हुआ खुशबूदार मसाला है, जिसमें अनेक जलावन की चीजें भी मिलाई गई हैं।
जलावन के सुलगने से जो ताप पैदा होता है, उस ताप से सुगंध की कण धुआं बनके हवा में फैल जाती हैं। अगर हम आग की लपट को ना बुझाएं, तो ये मसाला जल के राख बन जाएगा और जो सुगंध है वो नष्ट हो जाएगी। तो अगर धुआं नहीं तो सुगंध भी नहीं। And now let's get a little nostalgic about rainy days in school. What is fever? बुखार क्या है? आमतौर पर किसी भी स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रोग उस तापमान को बढ़ा देता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। बुखार अपने में कोई रोग नहीं है, यह सिर्फ भीतर के विकार का लक्षण है। यह विकार कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, चोट या अनेक प्रकार की बीमारियां। बुखार के समय शरीर का तापमान दिन में 2 बार थर्मोमीटर से नापना चाहिए, इससे कि डॉक्टर तापमान के उतर चढ़ाव के क्रम को समझ सकें। मलेरिया के बुखार का तापमान अलग ढंग से घटता बढ़ता है और निमोनिया का तापमान अलग ढंग से। अभी सवाल यह है कि रोगों से बुखार क्यों होता है और शरीर का तापमान कैसे बढ़ता है। इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर घोष से सुनते हैं। As you said, fever is not a disease itself. Most often, it is the symptom of an infection, or it could also be there when there is tissue destruction, as for example from a severe injury or when large amounts of tissues have died because of the lack of blood supply, or from a coronary attack. Now, there is a thermostatic center in the brain which controls our body temperature. Certain proteins released from bacteria, viruses, and destroyed cells of the body can act as triggers to make that center raise our body temperature. And when that happens, our heart rate or pulse goes up, and so does our breathing rate, and that helps to bring down our temperature somewhat. However, our body cannot afford to have high fever for too long or too often, because that destroys the proteins stored in our body. And as you all know, proteins are essential for life. बुखार शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की स्वचालित प्रक्रिया है। यह शरीर के हार्मोन, एंजाइम और ब्लड सेल का उत्पादन बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है और शरीर शुद्ध हो जाता है। तेज बुखार से शरीर में पानी घट जाता है, जिससे खून और पेशाब की मात्रा भी घट जाती है। साथ ही शरीर में प्रोटीन की मात्रा तेजी से गिर जाती है। बुखार को कम करने वाली दवाइयां दिमाग पर काम करके शरीर के तापमान को गिरा देती हैं। However, there has been a tendency nowadays for people to rush into medication the moment the body temperature rises even slightly. We have with us today Dr. S.C. Lahiri, emeritus medical scientist. Dr. Lahiri, what is your opinion on this sort of mode of medication? Quite simply, I would say treat the cause, and then the symptom, that is fever in this case, will go away by itself. In any case, a modest fever for 1 or 2 days is a very risky thing. Certain exceptions being accepted, however. So don't rush to administer aspirin or paracetamol if the fever is of the level of 99 degrees Fahrenheit. Aspirin in any case has its hazards for children. If the temperature becomes distressing, for example 103 or 104, then use paracetamol to lower the temperature, and if necessary combine it with cold sponging or alcohol sponging. In certain cases, temperature needs to be reduced early in what we may call risk category illnesses. For example, encephalitis, brain tumor, certain cardiovascular diseases, compromised myocardium, and of course, pregnancy. Now, it's been
Apart from this, it's been claimed that fever is part of the defense mechanism of the body. Well, there is some supporting evidence in from animal experiments, but there are no human experimental data in this regard. So at best, we can look upon it as an open question at this point of time. सुना है संगीत भी दवा का काम कर सकता है, तो चलिए इसको भी आजमा के देख लेते हैं। Why did the tabla sound more musical than the drum? तबले की आवाज ढोल से ज्यादा सुरीली क्यों लगती है? मृदंग काफी पुराना वाद्य है। असल में अमीर खुसरो ने मृदंग को बीच से काटकर तबला डुग्गी आविष्कार किया। जैसे आप जानते हैं, ढोल, मृदंग या तबला बजाने से पहले उन्हें कसना पड़ता है। सामान्य ढोल की तुलना में मृदंग या तबला की आवाज काफी सुरीली होती है। भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन का बचपन संगीत के उस्तादों के साथ गुजरा था। उन्होंने बड़े-बड़े मृदंग वादकों को सुना था, इसलिए जब उन्होंने ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड रैले का थ्योरी ऑफ साउंड पढ़ा, तो वे सोच में पड़ गए। रैले का विचार यह था कि ढोल या किसी गोलाकार कसे चमड़े पर थप देने से जो कंपन होता है, उससे सुरीली ध्वनि पैदा नहीं हो सकती। रमन इस पर रिसर्च करने लगे, जिससे उन्हें नई जानकारी हुई। डॉक्टर घोष, ये नई जानकारी क्या थी? Raman was most intrigued by Raleigh's uncontestable conclusion that ordinary drums cannot produce musical sounds. For from his childhood, he was familiar with the musical sound that comes out of a tabla or a mridangam. His researches ultimately led him to a most fascinating discovery from the point of view of science. He found that the central loading used in a tabla or mridangam makes all the difference. Let me explain. The instrument you see here is an oscilloscope, as you have seen before. It displays on its screen sound patterns produced by any source. Now, let's look at the sound pattern produced by an ordinary drum. And a sitar. They are different because there are harmonics or overtones present in the sitar sound, but not in the drum sound. Raman found that when a drum is centrally loaded, it can produce up to 5 harmonics. And so its patterns become somewhat similar to those of the sitar. In fact, an expert tabla player can produce musical sounds that go very well indeed with the sitar, though of course they are not as musical. The genius of Raman was that he also gave a mathematical proof that a centrally loaded drum ought to produce these harmonics, thus completing his scientific argument and clinching the issue. रमन ने सिद्ध किया कि तबले के मुंह पर जो गोलाकार गाब होता है, उसी से उसकी आवाज सुरीली हो जाती है। हालांकि तबले के पर्दे का कंपन सितार या सरोद के तारों के कंपन से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन तबले की आवाज सितार जैसी सुरीली नहीं होती। ढोल और तबले की आवाजों में जो फर्क है,
उसे जानने के लिए आइए एक प्रयोग करें। ड्रम के पर्दे पर पाउडर छिड़क देते हैं। देखिए, थाप देने पर कंपन वाली जगह से पाउडर खिसक कर बिना कंपन वाली जगह पर चला जाता है। इस तरह पाउडर की मदद से कंपन का एक सरल खाका बना। अब आइए यही प्रयोग तबले पर करते हैं। मगर उसका खाका सरल नहीं, जटिल है। तबले के कंपन में जटिलता गाब के कारण आई। इस तरह गाब की वजह से तबले में संवादी स्वर पैदा हुए और तबले की आवाज सुरीली हो गई। रमन ने इसी प्रयोग को गणित के आधार पर सिद्ध किया। एंड नाउ फ्रॉम म्यूजिकल स्केल्स टू स्केलिंग हाइट्स। Can a mountain be much higher than Mount Everest? क्या माउंट एवरेस्ट से कई गुना ऊंचा पहाड़ हो सकता है? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जिसका पुराना नाम है सागर माथा। इसकी ऊंचाई को सबसे पहले नापा था भारतीय सर्वेयर श्री राधानाथ शिकदार ने जॉर्ज एवरेस्ट की अगुवाई में। डॉक्टर घोष, हमको ये बताइए कि क्या इस पर्वत से ऊंचा, कई गुना ऊंचा पहाड़ इस पृथ्वी पर होना संभव है? The answer, surprisingly, is no. And the reason lies in the nature of the solid state of the rocks that support our mountains, as well as in the strength of the Earth's gravity. Now, our mountains are made up of granite materials in solid state. Now, in solids, the atoms are held together in a regular lattice by bonds that are pretty strong and that do not allow these atoms to move around very much in relation to one another. But of course, there is a limit beyond which these bonds would wobble and bend, and the rock or the solid begins to melt and flow. And this can be done by supplying energy to it in the form of gravitational pressure, that is, weight. So there is a limit to the height of mountains that these rocks can support, beyond which they begin to yield and the mountain begins to sink. Physicists have done a simple calculation which shows that no mountain on this earth can be higher than 30 kilometers. Now, the continents and mountains on this earth are actually supported on a denser mantle of basalt underneath. This material is warm and somewhat plastic. So these continents and mountains actually sink in this plastic material. Indeed, geologists and physicists working together have discovered that to every mountain there is an inverse mountain in the mantle below, caused by this sinking. In other words, these mountains float like gigantic icebergs in this plastic mantle. Therefore, this reduces somewhat the height of the highest peak from about 30 kilometers to maybe around 10 kilometers. And that is as high as Mount Everest. पृथ्वी की बनावट इस प्रकार है। धरती के केंद्र में पिघला हुआ लावा होता है। उसके ऊपर का हिस्सा मैंटल कहलाता है और बेसाल्ट से बना होता है, जो ना तो पिघला होता है और ना तो सख्त। सबसे ऊपर की परत पपड़ी जैसी होती है, जिसमें हमारी दुनिया बसी है, और इसको हम क्रस्ट कहते हैं। हालांकि ऊपर की यह परत 30 से 40 किलोमीटर मोटी है, लेकिन धरती के विशाल आकार को देखते हुए यह पपड़ी ही है। डॉक्टर घोष ने हमें भी बताया कि अगर कोई भी पर्वत बहुत ऊंचा हो जाए तो वो पृथ्वी के भीतर धंस जाता है।
क्योंकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी धरती इतनी मजबूत नहीं है जो बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ का वजन सह सके। वैज्ञानिकों ने सरल हिसाब लगाकर यह बता दिया है कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी पहाड़ लगभग 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं उठ सकता। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी 8,848 मीटर है। कार्यक्रम समाप्त करने के पहले हम डॉक्टर घोष सुनते हैं पिछले महीने के खास सवाल का जवाब। You would recall that when somebody else drops a card, you can't catch it. But if you drop it yourself, you can. Now, when you do the dropping and the catching yourself, both your hands get messages or signals from your brain simultaneously. One saying release it and the other saying catch it. But when somebody else releases the card and you are supposed to catch it, then there is a time lag between your seeing the card being released and your brain instructing your fingers to catch it. And this time is long, believe me or not, and invariably the card goes through. जैसे डॉक्टर घोष ने आपको अभी समझाया, जब आप कार्ड को खुद छोड़ते हैं और खुद पकड़ते हैं तो दोनों हाथों को संकेत एक ही समय दिमाग से मिलता है। परंतु जब कोई और कार्ड को छोड़ता है और आप पकड़ते हैं तो आपकी आंखें पहले कार्ड को गिरता देखती हैं और फिर आपका दिमाग आपके हाथ को बताता है कि कार्ड को पकड़ो। इसमें एक पल भर का समय निकल जाता है जिसको इंग्लिश में रिएक्शन टाइम कहते हैं, और इस पल भर के समय में कार्ड निकल जाता है, आप पकड़ नहीं पाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। तो आइए अब हम आपसे पूछते हैं इस महीने के खास सवाल को। एक निगाह डालें इस वस्तु पर जो दो जुड़े हुए शंकुओं की बनी हुई है। इसको मैं टेबल पर लुढ़काता हूं, लुढ़क जाती है। इसमें कोई चमत्कार नहीं। अब देखिए इस वस्तु को, इसकी दीवारें आनत हैं, यानी कि यहां पे ऊंची है और यहां पे नीची। तो अगर इस पे कोई भी लुढ़कने वाली वस्तु रखी गई तो वो लुढ़क कर नीचे तक पहुंच जाएगी। इसमें भी कोई चमत्कार नहीं आपने देखा, लेकिन अब देखिए चमत्कार। इस वस्तु को मैं नीचे की ओर रखता हूं, ये क्या हुआ? ये तो ऊपर की तरफ आ गई। ये क्यों और कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब हमारे अगले प्रोग्राम में। हमारे 6 नए सवालों को अपने टीवी स्क्रीन पर देखना ना भूलें। तब तक के लिए क्यों और कैसे की तरफ से आप सबको नमस्कार।